लकडाउन एक्सप्रेस। भारतीयहरूले नेपाल प्रवेश गरी सशस्त्र प्रहरीको क्याम्पमा आक्रमण गर्ने प्रयास गरेपछि 3 जना सशस्त्र प्रहरी पनि घाइते भएको समाचार प्राप्त भएको छ। यति बेला हामीसँग सर्लाहीबाट सशस्त्र प्रहरीका एसपी हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौं। एसपी साहब, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, अहिले भर्खरै एकजना गोली चलेको र एकजनाको मृत्यु भएको भन्ने समाचार प्राप्त भएको छ र भारतीयहरूले आक्रमण गरिएको भनिएको छ। एसपी साहबमा जानकारी गराइदिनुस् न। यो 9 वर्षको घटना, 9-5 वर्षको घटना हो। भारतबाट 20-25 जनाको समूह आएर हाम्रो यो नाका पर्छ, यो नारायणपुर नाकामा नेपाल प्रवेश गर्न खोज्यो र नेपाल किन प्रवेश गर्न नदिने हामीलाई भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ हामीले रोक्न खोज्दा हाम्रो हतियार पनि खोज्न लागेको थियो र हतियार खोज्ने क्रममा ढुङ्गामुढा पनि गर्यो। हाम्रो सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई कुटपिट पनि गरेको छ र हाम्रो सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी त्यसलाई रोक्नलाई पछाडि हट्दाखेरि उल्टो ढुङ्गामुढा गरेर अनि त्यसपछि ढुङ्गामुढा गरेर झन् आक्रामक रूपमा चाहिँ 100-150 जना आएको हुनाले त्यसपछि हवाई फायर गरेर स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन खोजेको र हवाई फायर गर्दा नि स्थिति नियन्त्रणमा नआएपछि 4 राउन्ड फायर गरेको थियो। अब यसमा भारतीय तर्फको एकजनाको मृत्यु भएको भनेर भनिएको छ र उनीहरू विशेष गरी किन नेपाल प्रवेश गर्न खोजेको, यसको प्रारम्भिक जानकारी यहाँले के पाउनु भएको छ? उनीहरू तस्करी हुन् या अन्य कुनै उद्देश्यले नेपाल प्रवेश गर्न खोजेका थिए, के थियो? यो सम्बन्धमा यो उताबाट नाका हो, यो नारायणपुर नाका हो। यहाँबाट चाहिँ उनीहरूको बुझ्दाखेरि सामानहरू पास हुने यो गर्ने गरेको र अहिले सशस्त्र प्रहरीको यही नाकामा ड्युटी हुँदा अवरोध रूपमा चाहिँ उनीहरूले देखेको हुँदा सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी माथि चाहिँ आक्रमण भएको देखिन्छ। अहिले यो क्षेत्रबाट भारतको सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा बल चाहिँ कति टाढा छ? सीमा एसएसबीहरू यही बोर्डरमा आएर बसिरहेछ, हामी सँगै छौँ, सम्बन्ध भइरहेछ। एसएसबी साहबहरूसँग उनीहरूसँग पनि सम्बन्ध भइरहेछ। अब यो अहिले सशस्त्र प्रहरीहरू पनि घाइते भएको भनिएको छ। कतिजना घाइते हुनुभएको? हाम्रो 3 जना घाइते भएको छ। 3 जनालाई उपचारको लागि मलङ्गो हस्पिटल पठाएको छ। उहाँहरूलाई अस्पताल पठाइसक्नु भएको छ। अहिलेको त्यहाँको अवस्था कस्तो छ? शान्तिपूर्णै छ या के छ? अहिले शान्तिपूर्वक नै छ। अहिले शान्ति नै छ। यता नेपालतर्फका नेपाली जनताहरू हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरूमा पछाडि बसिरहेका छन्। त्यसै गरी भारततर्फ पनि 50-60 जना गरेर ग्रुपमा बसिरहेको देखेको छ। यद्यपि चाहिँ बिचमा हामी बोर्डर एरियामा एसएसबी पनि उतातर्फका एसएसबी र हामी यता बोर्डर राख्छौँ। यसभन्दा अगाडि पनि विशेष गरी यही सर्लाही क्षेत्रमै यस्तो किसिमको घटना भएको थियो जहाँ भारतीय नागरिकहरूले सशस्त्र प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने प्रयास गरेका थिए। यो त्यही क्षेत्रतिरको घटना हो? यो अहिले पूर्व क्षेत्रको अस्ति भएको विगत समय भएको पश्चिमतिर, योभन्दा पश्चिमतिरको घटना हो। हुन्छ सर, यो जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सशस्त्र प्रहरीका एसएसपी हुनुहुन्थ्यो र उहाँले अहिले त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनु भएको छ। विशेष गरी सर्लाहीको सीमावर्ती क्षेत्रमा गोली चलेको छ र भारतीय र सशस्त्र प्रहरी बीच दोहोरो भिडन्त भएसँगै विशेष गरी भारतबाट 20-25 जनाको समूहमा नेपाल प्रवेश गर्न खोजेको र सशस्त्र प्रहरीले रोक्ने क्रममा उनीहरूले ढुङ्गामुढा गरेको र 100-150 जनाको सङ्ख्यामा आएर सशस्त्र प्रहरीको हतियार खोज्न खोजिसकेपछि प्रहरीले यति बेला गोली चलाउन बाध्य भएको भनेर उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ र सशस्त्र प्रहरीका 3 जना जवान पनि घाइते भएका छन् र उनीहरूको उपचार भइरहेको भनेर जानकारी गराएको छ। र यति बेला भारतीय सीमा सुरक्षा बल पनि बलका प्रहरीहरू पनि त्यहाँ रहेको र सशस्त्र प्रहरी पनि त्यहाँ रहेको अवस्था शान्तिपूर्ण नै रहेको पछिल्लो अवस्था भनेर उहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो र जसमा एकजनाको मृत्यु भएको छ जो भारतीय छन्। उनीहरू सशस्त्र प्रहरीमाथि आक्रमण गर्न खोज्दा यो घटना भएको भनेर जानकारी गराउनु भएको छ। सर्लाहीको सीमावर्ती क्षेत्रबाट हामीले सशस्त्र प्रहरीका एसएसपीसँग कुराकानी गर्दा उहाँले पनि यही नै भन्नुभएको छ र यो एउटा दुःखद घटना भएको छ। लकडाउन एक्सप्रेस।
अब भारतबाट 150 को हाराहारीमा भारतीयहरू यहाँ आएर यो चेकपोस्टलाई एक किसिमले चेकपोस्टमाथि आक्रमण गरेको थियो, ढुङ्गा मुढा गरेको थियो र हतियार छिनेर लग्ने एक किसिमको प्रयास भएपछि सशस्त्र प्रहरी बलले आत्मरक्षाको लागि हवाई फायर गरेको थियो र हवाई फायर गरेपछि पनि भारतीय पक्ष भारतबाट आएका भारतीयहरूले नमानेपछि सशस्त्र प्रहरी यहाँबाट हटेर 100 मिटरसम्म पर गएको थियो। ड्युटीमा तैनात अफिसरसहित 9 जनाको ड्युटीमा तैनात हाम्रो सुरक्षाकर्मीमाथि चाहिँ नि यहाँ बस्यो, ड्युटी गर्यो। यहाँ बसेर हामीलाई समस्या भयो भनेर चाहिँ नि हातपात गर्न थाले र हाम्रो सशस्त्र कर्मचारीलाई टाउकोमा लाग्ने गरी चोट पनि पुर्यायो र लुछाचोली पनि गर्यो, सँगसँगै हतियार पनि खुसेर लग्यो र त्यो गर्दाखेरि हामीले हतियार खुसेर लैजाने क्रममा चाहिँ हामीले हवाई फायर गरेर हतियार चाहिँ हाम्रो वापस गऱ्यौँ र त्यसपछि चाहिँ उनीहरूको मान्छेहरू 100-150 जनाको मान्छे भेला जम्मा भएर हामीलाई हाम्रो सुरक्षाकर्मीमाथि ढुङ्गा प्रहार गर्न थाले। हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरू बोर्डर एरियाबाट लगभग 150 मिटर ब्याक भए, ब्याक हुँदा पनि ढुङ्गा प्रहार गर्यो र आइलागेको हुनाले हवाई फायर गरेर स्थिति नियन्त्रणमा नआएको सन्दर्भ अवस्था रहेको हुँदा अनि त्यसपछि चाहिँ गोली घुँडामुनि लाइन पोजिसनमा गएर घुँडामुनि गोली फायर गरेको। फर्स्ट में तो 12-14 आदमी से आए रहे और के बाद पूरे गाँव जुट गए। बहुत आदमी रहले हात हतियार छिनेको प्रयास गरे, हाथ हतियार छीन के ले जाके प्रयास में। यो जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौं र सशस्त्र प्रहरीका 3 जना प्रहरीहरू पनि अहिले चिकित्सक रूपमा घाइते भएका छन्। उनीहरूको उपचार यहाँ सर्लाही अस्पताल मलङ्गामा चलिरहेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौं। एबी न्यूज खबरको लागि बख्तियार अली, सर्लाही। समाचार अब विस्तारमा। सर्लाहीको पर्सा गाउँपालिका 3 नारायणपुर स्थित नेपाल भारत सीमामा भारतीय नागरिकहरू जबरजस्ती नेपाल छिर्न खोजेपछि तनाव उत्पन्न भएको छ। नेपाल प्रवेश गर्न नदिएपछि भारतीय नागरिकहरूले सीमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीमाथि हातपात गर्नुका साथै हतियार समेत खोसेका थिए। करिब 10 गजा भन्दा 100 मिटर भित्र आएपछि उनीहरूलाई प्रहरीले रोकेको थियो। प्रहरीले रोकेपछि उनीहरू हातपात गर्नुको साथै प्रहरी बस्न बनाइएको टेन्टलाई समेत उनीहरूले तोडफोड गरेका छन्। प्रहरीमाथि आक्रमण गर्न र हतियार खोसेपछि प्रहरीले भिडलाई तितरबितर गर्नका लागि 10 राउन्ड हवाई फायर गरेको थियो। हवाई फायरले भिड नियन्त्रण हुन नसकेपछि 5 राउन्ड गोली समेत चलाइएको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक गंगाराम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। हतियार खोस्ने एकजना भारतीय नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिइएको पनि बताइएको छ। एकजना सुरक्षाकर्मीको पोशाक पनि च्यातिएको थियो। अहिले सीमा क्षेत्रमा दुवै तर्फबाट व्यापक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। प्रहरीको गोली लागेर 5 जना भारतीय नागरिक घाइते भएको बताइएको छ। घाइतेहरूलाई भारतीयहरूले नै बोकेर भागेकाले के कतिजना घाइते भएको हो भन्ने पनि यकिन हुन सकिरहेको छैन। केही दिन अघि पनि विष्णु गाउँपालिका अन्तर्गत सिमरा फेनरा नाकामा खटिएको सशस्त्र प्रहरीमाथि भारतीय नागरिकहरूको समूहले आक्रमणको प्रयास गरेका थिए। त्यस्तै ब्रह्मपुरी गाउँपालिकाको त्रिभुवन नगर नाकामा पनि तस्करहरूले सशस्त्रले ड्युटी गर्नका लागि बनाएको झुपडी समेत जलाएको थियो। कोरोनाको महामारी बढी फैलिएका सीमा क्षेत्रमा भारतीय नागरिक जबरजस्ती नेपाल प्रवेश गर्न खोज्दा सुरक्षा निकायसँग झडपका श्रृङ्खलाबद्ध घटना भएका छन्। जबरजस्ती नेपाल प्रवेश गर्न खोज्नेहरूले नेपाली सुरक्षा निकायका पोस्टमा आक्रमण गर्न थालेपछि झडप भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका बन्दपछि मात्रै नेपालका सुरक्षा पोस्टहरूमा भारतीय नागरिकले 14 पटक भन्दा बढी आक्रमण गरिसकेका छन्। शुक्रबार सर्लाहीमा त नेपाली सुरक्षाकर्मीको हतियार नै खोज्ने प्रयास भएपछि गोली चलाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो। नेपाल र भारत दुवै देशले महामारी रोकथामका लागि सीमा नाका बन्द गरेपछि झण्डै 3 महिनादेखि नेपाल भारत सीमा बन्द छ। कतिपय व्यक्ति लुकीछिपी पनि नेपाल प्रवेश गर्न खोजेपछि सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्नो उपस्थिति बढाएको छ। तर भारतबाट आउने उच्छृङ्खल समूहले नेपाली सुरक्षा फौजका पोस्टमाथि पटक पटक आक्रमण गरिरहेका छन्। शुक्रबार बिहान पनि सर्लाहीको पर्सा स्थित नारायणपुरमा भारततर्फबाट आएको एक समूहले नेपालको सिमानामा तैनात सशस्त्र प्रहरी बलमाथि आक्रमण गर्यो। सीमा बन्द रहेको अवस्थामा जबरजस्ती नेपाल प्रवेश गर्न खोजेपछि रोक्न खोज्दा ठूलो समूहमा आएका उनीहरूले सशस्त्रमाथि आक्रमण गरेका हुन्।
त्यसको प्रतिवादमा हवाई फायर गरे पनि हटेनन्। बरु उल्टै नेपाली सुरक्षाकर्मीको हतियार खोज्न आएको सशस्त्रको भनाइ छ। आत्मरक्षा र हतियार जोगाउन गोली चलाएको र एक भारतीय नागरिकको मृत्यु भएको सशस्त्रका अधिकारी बताउँछन्। अन्य 2 जना भारतीय र सशस्त्र प्रहरी बलका 3 जवान घाइते भएका छन्। सुरक्षाकर्मीको हतियार खोज्ने 1 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। सशस्त्र प्रहरी जवान उपर ढुङ्गामुढा प्रहार गर्ने र हाम्रो सशस्त्र प्रहरीले लिएको हतियार नै खोसेर लैजाने उनीहरूले प्रयास गरे। हतियार खोसेर लगे र त्यो बीचमा सशस्त्र प्रहरीले जुन ढुङ्गामुढा पनि गरेको अवस्थामा हवाई फायर गर्यो। हवाई फायर गर्दा पनि स्थिति नियन्त्रणमा नआएपछि आत्मरक्षाको लागि र हतियार पनि जोगाउनको लागि सशस्त्र प्रहरीले गोली चलाउँदाखेरि 3 जना घाइते भएको जानकारी आएको छ र त्यसमध्ये जुन त्यो भारत सीतामढीको 1 जनाको मृत्यु भएको पनि हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। अहिले थप बाहिनीपति गणपतिहरू घटनास्थलमा हुनुहुन्छ र समन्वय दुवैतर्फको काउन्टर पार्टसँग नै समन्वय भइरहेको छ। नेपाली सीमामा भइरहेका अतिक्रमणका बारेमा नेपाली सुरक्षाकर्मीले उठाएका प्रश्नमा भारत मौन बस्दै आएको छ। लकडाउनपछि भएको सीमानाका बन्दकै क्रममा सिराहा, कपिलवस्तु, झापा लगायतका विभिन्न जिल्लामा 14 पटक नेपाली सीमा सुरक्षा पोस्टमा भारतीय समूहले आक्रमण गरेका छन्। यसमा खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै अवैध रूपमा सीमा पार व्यापार गर्न खोज्नेहरू बढी छन्। र काउन्टर पार्टसँग पनि सम्पर्क र समन्वयलाई सुदृढ तुल्याएर स्थितिलाई नर्मल बनाउन, नागरिकमा सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिन, हाम्रो सीमा सुरक्षालाई सुदृढ गर्न हामी लागिरहेका छौँ। हामीले मातहतलाई भनिरहेका छौँ। हामीले सबै जनशक्तिलाई चाहिँ निर्देशन दिएका छौँ। त्यसो त नेपाली सीमा क्षेत्रमा यस्ता उच्छृङ्खल समूहको मात्रै होइन, भारतीय सुरक्षाकर्मी एसएसबीबाट पनि आक्रमणका विषयमा पनि नेपालले पटक पटक प्रश्न उठाउँदै आएको छ। भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपाली भूमिमै आएर गोली चलाउँदा 3 वर्ष अघि कञ्चनपुरमा गोविन्द गौतमको ज्यान गएको थियो। त्यस्तै बर्दिया र अन्य कतिपय जिल्लामा सीमा क्षेत्रका नेपाली भारतीय सुरक्षा निकायले बेपत्ता पारेको प्रतिवेदन राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले केही महिना अघि सार्वजनिक गरेको छ। नेपालतर्फ भइरहेका यस्ता आक्रमण नियन्त्रणका लागि सीमामा व्यवस्थापन र सुरक्षाको दीर्घकालीन समाधानका लागि राजनैतिक तहबाटै खोजिनुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश धमला, काठमाडौँ। At around 8:40 in the morning, there was a local incident. The incident was something like this. There is one person, one villager named Lagan Yadav, of the age of about 45 years, who belongs to Janki Nagar village of Sonvarsha police station of Sitamarhi district of Bihar. His family members, one of the daughter-in-law is from Nepal. She's a Nepal citizen. So you are very well aware that people get married from this side to that side. So the ties are quite strong. So she had come, and probably some of the female members of Lagan Yadav family, they were also having some chat.
Nepal APF, as it is alleged, and it is said by Nepal APF people, that they objected to this, saying that the lockdown in Nepal continues up to 14th of June, so they wanted him to go away. This led to some altercation, avoidable altercation, I will say, because this was completely local issue that generated from an instant altercation. So this led to some people coming from Sonvarsa village, and they started arguing. Then Lagan Yadav was apprehended. It is being alleged by Nepal APF that all the villagers became aggressive, and they had to open fire, 15 rounds of fire. 10 rounds were fired in the air, and the villagers are saying that they got aggressive. Nepal APF got aggressive, they fired. So this is a version and counter version. That is subject matter of investigation in this local issue. But in the ensuing altercation that happened, that resulted in this firing, ultimately led to bullet injury to 3 persons. One named Mr. Uday Thakur, he's aged about 24 years. Another is Umesh Ram of 18 years. Third is Vikesh Yadav of 22 years, who received a bullet injury just near his chest, and the other 2 got bullet injury in their thighs. So all these 3 people came to Sitamarhi. They were being treated in one of the private nursing homes run by some Dr. Varun, where these 2 people who have received injuries in their legs and thighs are being treated, and they are said to be doing well. But the person Vikesh Yadav, who received injury on his chest, succumbed to injury. So he has died. Lagan Yadav is still said to be in the custody of Nepal police. SSB battalion, 51st battalion commandant has already spoken with SP Sarlahi, and he had apprised SP Sitamarhi, DM Sitamarhi about this incident. They are seized of the matter. They have also intervening. So SP Sarlahi, he is in touch with SP Sitamarhi. They will be instituting a case, or whatever the versions are there, both the sides will be instituting the case, and it's all a matter of investigation. But I like to reiterate that this is a completely local issue that has emerged from a local altercation that was not brewing for long, that just instantly emerged. Well, let's begin the broadcast with this big breaking news coming in at this point in time. Firing along the Indo-Nepal border by the Nepal Shastra Police at Janki Nagar in Sitamarhi is being reported. Let's go across to Sham, who has more details on this. Sham, what are the details about this firing along the Indo-Nepal border? Well, it's being said that Indian farmers were in the fields when it is being said that all of a sudden the Nepal Sashastra Police started firing indiscriminately at these farmers there who were working in the fields. Now, we all know that there has been some tension along the border after Nepal trying to amend its constitution to adopt a new map. And in its new map, certainly several Indian territories, places have also been shown in the map.
So viewers, we start this bulletin with some updates coming in from the Indo-Nepal border issue this time. We are getting in a response from the SSB DG on the firing that took place at the India-Nepal border as well. In fact, the SSB DG Kumar Rajesh Chandra has now stated that the firing on the India-Nepal border incident happened deep inside the Nepalese territory. Situation is normal now. We'll go across to my colleague Prakash, who's also joining us live over the phone line. In fact, Prakash, over to you. Please take us through the details and the first response coming in from the SSB DG over the Indo-Nepal border issue. Well, this scuffle is taking place on the bordering areas of Indo-Nepal in around the vicinity of Sonvarsa block in Sitamarhi district, wherein there was a gun battle between the Nepali police and some group of laborers. And what we get to know from the SSB DG Kumar Rajesh Chandra, that one person has been detained by the Nepalese security personnel, and he says that we are in talks with them so that they release him and matters don't escalate. And the SSB DG is inquiring into the matter, and SSB says that the incident has happened in Nepal and not on the Indian side. So at around 8:40 a.m., a family was going to Nepal. They were stopped by the Nepali security personnel at the border and asked to go back, which triggered a verbal altercation. Nepal security personnel fired around 15 rounds, in which 3 persons were injured and 1 died. That is the news so far. And the SSB is in touch with the Nepalese police, as well as the government of India has also initiated talks with the government of Nepal, so that the person who's been kept in custody in Nepal may be released soon, so that issued a statement. He says that the Nepal police fired around 15 rounds, out of which 10 were in the air. 1 person has been detained by the Nepal police, and Bihar police is in talks now with Nepal police for his release. The police say around 8:40 a.m. a family was going to Nepal and they were stopped by the police, which triggered a verbal altercation. But Shiv-Pujan Jha also joining us now on the broadcast. Shiv-Pujan, breaking updates coming in from the Nepal border on this border firing incident. What are the details that you are picking up through your sources? The entire situation. In fact, earlier in the day today, there was some kind of fracas that started building up on the border in Sonvarsa area of Sitamarhi, and apparently some of the locals, they entered into heated argument with the Nepalese police, and subsequently they started firing, in which we are told that 4 people, they received bullet injuries, 1 person succumbed to the injuries, and 3 others, they received bullet injuries. They are presently undergoing treatment. The SP of Sitamarhi himself is confirming that their condition is well under control, and no one is seriously injured. But yes, they have received bullet injuries. After that, in fact, the senior officials, they themselves have swung into action. Discussions are taking place to de-escalate the entire situation. Whatever we have managed to get, and as is evident in the say at the nascent stage of investigation, from that it is almost clear that possibly there was it has something to do with the smuggling. Remember, the border is highly porous, and in the lockdown there are prohibitory orders in place. The borders are completely sealed, yet the smuggling activities were going on for some time. And when the Nepalese police, apparently they tried to stop it, this kind of incident took place. Right now there is heavy build-up that has taken place on the border, and tension does prevail, but all attempts are on to ensure that this does not escalate further. But yes, this is one stretch which has been witness to much smuggling even in the past from both the sides. Liquor being smuggled from that part of the border, and food and other essential commodities being smuggled from Indian territory into Nepalese territory. This was being stopped for quite some time, both by the SSB as well as the Nepalese police, and that is the reason why we have such instances of smugglers entering into fracas with both the SSB posted on the Indian side as well as the Nepalese police on the other side. That has been taking place. तो बता दें आपको कि चीन के इशारे पर भारत को आंख दिखाने वाले नेपाल
और उसकी सेना ने भारतीय मजदूरों पर गोली चलाई है। बिहार के सीतामढ़ी का वाकया है, जहां पर भारत नेपाल सीमा पर नेपाल पुलिस की ओर से अंधाधुंध फायरिंग की गई और उसमें 4 भारतीयों को गोली लगी है। उन्होंने गोलीबारी चलाई। देखिए हो रहा है, देखिए बस फायरिंग किया है, तब तक ले हमको भागे हम इंडिया में थे। इंडिया में से हमको पकड़ करके रगेद के हमको पूना से बंदूक से मार करके तब पकड़ करके ले गया है नेपाल में संग्रामपुर। 77 बोला पुलिस हमको वहाँ रखा, वहाँ बहुत पीट पाट किया है। यहाँ पूछ रहा है से बोलो झूठ सच नहीं बोलो से नेपाल में लाया है तो बोलो सही नेपाल से पकड़ के लाया है। हम कहे सर हमको मार दीजिए चाहे जो करिए, हमको इंडिया से पकड़ करके लाया है, बंदूक से चहेटा कर करके मार करके भेज करके तब ले गया है वहाँ। दोस्तों, जिस तरह नेपाल और भारत के संबंध बिगड़ते जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हाथ है भारतीय मीडिया का। तो दोस्तों, इस न्यूज को भारतीय मीडिया किस तरह दिखाया और एक्चुअल में ये किस तरह हुआ था और क्यों गोली चली थी और गलती किसकी थी, सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हर चीज में भारतीय मीडिया नेपाल को टारगेट कर रही है कि वो चाइना के इशारा में चल रहा है। तो दोस्तों, अगर साफ तौर पे देखा जाए तो ये जो मसला हुआ था और जिस तरह की बात हुई थी बॉर्डर पे और जिस तरीके से ये झड़प हुआ था, इसमें चाइना का कहीं भी हाथ नहीं है। मैं अभी प्रूव करके दिखाता हूं आपको। उन्हीं से 4-5 आदमी आके एक डायरेक्ट अपने स्टाफ पर हमला कर देते। स्टाफ मतलब नेपाल प्रहरी पर, नेपाली सशस्त्र प्रहरी पर तो का हमला के बाद एक छीन छोड़ कर लगले। तू अपन तब एक बाद अपन एक्शन अपना कतेक आदमी के हरारी में उन्नीस आयल, कहीं 150 आदमी रहले। फर्स्ट में तो 12-14 आदमी से आये और के बाद पूरे गाँव जुट गए। तो दोस्तों, दरअसल आपको पता ही है कि भारत में शराब बंद है। तो शराब बंद होने के कारण ये जो लोग गए थे वहां पे बॉर्डर पे और सशस्त्र प्रहरी को देखकर कहीं खेत की ओर से घुस गए थे नेपाल में।
और वो जा रहे थे शराब पीने ही कि तब तक सशस्त्र प्रहरी बल उन लोगों को देख लिया और जाके उन्हें रोका कि आप लोग अभी नेपाल में मत घुसो, यहाँ पे कोरोना का बहुत ज़्यादा केस ऑलरेडी आ रहा है, हम लोग वैसे भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज़ आप लोग इंडियन है तो कुछ दिनों तक अपने ही जगह पे रहिए और नेपाल में आने की कोशिश मत करिए क्योंकि अभी यहाँ पर पूरी तरह से लॉकडाउन चल रहा है। तो दोस्तों वो लोग पीने की जुनून था उन लोगों को, वो लोग अब सशस्त्र प्रहरी से कुछ बात करने लगे, आर्ग्यूमेंट करने लगे। आर्ग्यूमेंट के दौरान वो लोग अब बहुत अभद्र बात बोलने लगे कि आप लोग घूस खाते हो तो कोई बात नहीं है, आप लोग मतलब कि सीमा पार करवा रहे हो, खाद वगैरह हर चीज पार करवा रहे हो, सामान पार करवा रहे हो, इलीगल चीज पार करवा रहे हो, जो कि एक सबूत विहीन बात बोल रहे थे, वो भी सशस्त्र प्रहरी बल के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये हमारी देश का वो पुलिस नहीं था, वो प्रहरी थे, नेपाल के पुलिस थे, और किसी के देश में जाकर उसी देश में जाकर उसके आर्मी यानी बॉर्डर का जो सुरक्षा बल होता है उसके ही खिलाफ में बोलना कहाँ तक ये सही था। तो दोस्तों उन लोगों ने कहा कि जाओ नहीं तो बहुत पीटे जाओगे, तुम लोग यहाँ से चल जाओ। तो इन लोगों के बीच में झड़प होने लगा कि मार के दिखाओ। तो वो लोग मतलब कि पहले हाथापाई किए, तो जब बर्दाश्त से ये लोग बाहर करने लगे, वो लोग कम ही पुलिस थे और ये लोग थे 10-15 आदमी, जो कि हमारे भारतीय लोग थे 15 आदमी के एरे गहरे थे, और वो लोग थे 4-5 आदमी थे। तो दोस्तों ये लोग उन लोगों पे हावी बोल दिया और उन लोगों के हथियार तक छीनने की कोशिश किया। तो उन लोगों ने हवाई फायर करना शुरू कर दिया। जब वो लोग हवाई फायर किए तो दोस्तों अपने हथियार के बचाव के कारण, क्योंकि अगर किसी भी प्रहरी हो या पुलिस हो या आर्मी हो, अगर उसके हथियार कोई छीन लेता है या कहीं गुम हो जाता है तो उसका नौकरी खत्म हो सकती है दोस्तों। तो अपने साथी की नौकरी बचाने के कारण जो बंदूक छीने था उसके सीने में गोली दाग दिया नेपाल के सशस्त्र प्रहरी बल ने। बाकी लोग वहां पे जो झगड़ा कर रहे थे, विवाद कर रहे थे, गोली उन लोग चलाने लगे। उस गोली के दौरान में 3 आदमी घायल हुआ और जिसके छाती में गोली लगा था वो वहीं पर मर गया दोस्तों। तो एक्चुअली में बात ये था जो कि सशस्त्र प्रहरी बल भी कह रहा है और वहाँ के जो नेपाल के बासिंदा लोग हैं वो भी कह रहे हैं, और हमारे भारतीय के बासिंदा जो ये लोग देखे कि किस तरह झड़प हुआ और कारण क्या था झड़प का। तो यही कारण था झड़प का कि दोस्तों ये लोग जाकर नेपाल में और नेपाल के ही पुलिस को घूसखोर बोलने लगे। कुछ मतलब कि इधर से ही गलती स्टार्ट हुआ था, हमारे भारतीय लोग से ही गलती हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे जहां तक लग रहा है कि चाइना का कोई भी हाथ नहीं है। अगर हमारे ही क्षेत्र में आकर कल नेपाल के आदमी कुछ इस तरह बोले और हमारे एसएसबी के जवान उसे मारे तो क्या हम नेपाल के लोग हमें कहेंगे कि अमेरिका के द्वारा हम लोग प्रचालित होकर हम मारे हैं? नहीं दोस्तों, हमारे सीमा में अगर कोई आकर उस तरह बोलेगा तो हम भी ठोकेंगे ही। तो सेम वही किए हैं नेपाल के सशस्त्र प्रहरी बल। इसके एक ही पॉइंट ऑफ व्यू की जा रहा था, किसान था, किसान को गोली चला के मार दिया। अभी तक नेपाल ने ऐसा कोई चाल नहीं चला था, अभी तक ऐसा कदम नहीं उठाया था। कोरोना वायरस का एक बहाना बना रहा है दोस्तों। हमारे देश में ना कोरोना वायरस को बहुत ही इजीली ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन नेपाल में बहुत ही बड़ा रूप में नेपाल में लिया जा रहा है कोरोना को, और इससे बचने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों ऐसे में जो सशस्त्र प्रहरी बल ने अपने हथियार बचाने के लिए गोली चलाया, तो हम उसे ये नहीं कह सकते हैं कि चाइना के बहकावे में आकर गोली चला रहा है नेपाल। दोस्तों ऐसा कई घटना नेपाल के लोगों के साथ हमारे एसएसबी के जवान कर चुके हैं, लेकिन उसका हमारे मीडिया वाले कभी नहीं दिखाएंगे। दोस्तों 2015 में जब नेपाल में अर्थक्वेक आया था और मधेसी लोगों ने विरोध किया था नए कॉन्स्टिट्यूशन का, तो दोस्तों जो अघोषित जो नाका बंद किया गया था उस दौरान रौतहट जिला है नेपाल में, उस रौतहट जिले के राजपुर गाँव के एक मौलवी थे, मतलब मुस्लिम थे। वो इंडिया से कुछ 5 किलो या 7 किलो चीनी लेकर जा रहे थे अपने गांव में। बॉर्डर पे ही एसएसबी के जवान उसे रोके और
बहुत गंदा तरीका से गाली दिया उनको और पैर पे पैर रख के ऊपर ऐसे उठा दिए। अब किस तरह उसे उठाया जाके आज मतलब कि वो किया, उससे जाते ही घर पे दर्द होने लगा सारे बदन और कल उसका मौत हो गया। दूसरा केस दोस्तों रोहतहट जिला के ही एक गांव है जिसका नाम है बंकुल। बंकुल के एक बहुत ही गरीब परिवार के आदमी था जो कि दुकान चलाया करता था किराने का। गुंती में होता है, हमारे बिहार में एक गुंती टाइप का होता है, काठ का एक छोटा सा घर टाइप का बनाकर उसी में सामान वो बेचकर गुजारा किया करता था वो बूढ़ा आदमी। तो वो गया था बिस्किट लेकर आ रहा था। बंकुल लास्ट एरिया है नेपाल का और वहां से इंडिया शुरू हो जाता है। तो बॉर्डर वो क्रॉस कर रहा था, वहां पर एसएसबी ने देखा, उसे भी ठीक वही तरीका अपनाया गया। उसके पैर पे पैर रख के उसके सर को ऐसे उठाकर उसे मतलब कि रबड़ की तरह तान दिया गया और वो आया उसी दिन वो मर गया। तीसरी घटना मैं बताता हूँ, रोहतहट जिला के ही गौर सिटी का एक इंसान थे, फैमिली वाले थे, वो गए थे अनाज के लिए। अनाज बैरगनिया से लेकर गौर जा रहे थे। बैरगनिया चंपारण जिला में पड़ता है दोस्तों। तो वो चंपारण से, बिहार के चंपारण में पड़ता है बैरगनिया, और बैरगनिया और गौर दोनों बॉर्डर है और हमेशा से लोग सामान लाते जाते ही रहते हैं। तो वो लेकर आ रहे थे, ऐसे में हमारे एसएसबी जवान ठीक उसी तरीके से उसके पैर पे पैर रख के और सर पे ऐसे रख के उसे रबड़ की तरह तान दिया और वो आदमी भी जाकर अपने घर पे एक दिन के अंदर ही मर गया। तो ये न्यूज कोई भी हमारे भारतीय मीडिया नहीं दिखाएगा, ना तो दिखाएगा कि किस तरह हमारे भारतीय एसएसबी ने निर्दोषों के जान ले ली, जो कि 5 किलो चीनी, बिस्किट और घर के अनाज लेके जा रहे थे। तो वो नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो दिखाने में इन लोगों को टीआरपी नहीं बढ़ेगी, इन लोगों का जो एड रेवेन्यू आएगा वो जनरेट नहीं हो पाएगी। ये है हमारे देश का मीडिया जो कि पूरी तरह से सड़ चुकी है अंदर से, जो कि क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जा सकता इसके बारे में। Our conclusions, 12th of June 2020. 1. Nepal was under ongoing full nationwide lockdown from 3 months. All international border closed. All the bordering peoples were well aware of this. Nepal plus India. Still such incident. Political agenda from the Indian side. 2. The APF had respectfully told the Indian group trying to enter Nepal to go back as we were under full lockdown. But the group started arguing with the police and eventually attacked and tried to snatch the APF's weapons as well. This shows that Nepal's intention was for peace. The Indian side lacked the discipline and even were violent towards Nepal. 3. It was stated that this was an avoidable altercation. Due to the violence, first 10 rounds of firing were shot in the air. This was enough warning. Still, the violence was not down from the Indian side. So, this makes us hard to believe that there was an avoidable altercation practically. 4. It was also reported in the Indian news that the Indian farmers were working in the field inside Indian territory when the APF started to shoot at them. Well, it's being said that Indian farmers were in the fields when it was being said that all of a sudden the Nepal Sashastra police started firing indiscriminately at these farmers there who were working in the fields. This was a sad incident and we take such incidents seriously, but
This Indian news was hilarious to us. Can you even imagine this? Indian farmers were peacefully farming on the Indian side. The APF suddenly got crazy out of nowhere and started firing at those Indian farmers. Crazy. 5. Firstly, the person who was detained reported to the Indian police, SSB, that he was inside the Nepali territory when the incident happened. The SSB had formally made this information available to the public. However, that same person was later lured by the Indian media, #Godai Media and #Godai Media 2, and he started saying that he was inside India and was beaten and dragged towards Nepal by the APF. Amazing. SSB says that the incident has happened in Nepal and not on the Indian side. बस फायरिंग किया है, तब तक ले हमको भागे हम इंडिया में थे। इंडिया में से हमको पकड़ करके रगेद के हमको पूना से बंदूक से मार करके तब पकड़ करके ले गया है नेपाल में संग्रामपुर। 77 बोला पुलिस हमको वहाँ रखा, वहाँ बहुत पीट पाट किया है। यहाँ पूछ रहा है से बोलो झूठ सच नहीं बोलो से नेपाल में लाया है तो बोलो सही नेपाल से पकड़ के लाया है। हम कहे सर हमको मार दीजिए चाहे जो करिए, हमको इंडिया से पकड़ करके लाया है, बंदूक से चहेटा करके मार करके भेज करके तब ले गया है वहाँ। 6. Nepal-India border issues and border management has to be given focus promptly. 7. Propaganda, fake and provoking news has to be stopped from the Indian media, run in both Hindi and English language, #Godai Media and #Godai Media 2, or simply boycott Indian media internationally. 8. Discipline is a must in the citizens of both sides. 9. Stop making hate comments and speech in social media. Rather, focus on factual, rational, and reasonable talk. Avoid the prejudice tact. 10. Friendship has to be re-established between Nepal and India. One person was injured after Nepal police fired at Indians who were in no man's land. This incident happened at Fatehpur. Let's straight away go across to my colleague Sham Sundar joining us on the broadcast. Sham, what more details can you share with us? What is the condition of these three people? Well, let me tell you that it was an unprovoked firing by the Nepali police there at Kishanganj district. Now, it's been said that these three people were said to be farmers, were grazing their cattle in no man's land, and they had gone to find their cattle in the evening. When all of a sudden, it is being said that the Nepali forces started firing at them, in which one of them was injured, and it's been said that the other two somehow managed to escape, and then they took this injured person to the local hospital, from where he has been referred to another hospital, and he's said to be in a serious condition now. But certainly the district administration has raised this matter with the counterpart in Nepal there.
to another update that we have for you. Fresh provocation by Nepal. An Indian national got injured after the Nepal police shot at 3 men near India-Nepal border in Bihar's Kishanganj. This is the second such incident that has been reported from India-Nepal border in recent times. Last month, the Nepal Armed Police Force responsible for border security had opened fire on a group during a clash at a border point near Sitamarhi in Bihar. Shyam joining us on the broadcast for more on this. Shyam, what more details can you share with us? Second provocation coming in a few weeks. Well, yes, absolutely. Of late, we have seen that how there has been unnecessary provocation from the Nepal government and from the Nepal Armed Police. Now, this incident happened near Kishanganj district in the no man's land. It's been said that they were farmers and they usually go to this place to graze their cattle. Now, it was the evening time and it was time to return home when the farmers went to find their cattle, and all of a sudden, when they reached the no man's land, there was unprovoked firing from the Nepal Armed Police, in which one person was injured and two somehow managed to escape. And it was these two who took him to the local hospital, after which he was referred to the Sadar hospital. Now, certainly, the district of Kishanganj and the administration is in talks with the Nepal government. All right. Thank you very much, Shyam, for the moment, for joining us with all. Well, it's being said that Indian farmers were in the fields when it was being said that all of a sudden the Nepal Sashastra police started firing indiscriminately at these farmers there who were working in the fields. Well, let me tell you that it was an unprovoked firing by the Nepali police there at Kishanganj district. Now, it's been said that these 3 people were said to be farmers, were grazing their cattle in no man's land, and they had gone to find their cattle in the evening, when all of a sudden it is being said that the Nepali forces started firing at them. Our conclusions, 19th of July 2020, 1. Nepal was under ongoing full lockdown from months. All international borders closed. All the bordering peoples were well aware of this. Nepal plus India. Still such an incident. Political agenda from the Indian side. 2. Again, playing the farmer card by Indian media towards Nepal-India border tension. Farmer graze cattle in the field at night. 9 p.m. Amazing. 3. Can you believe again that the farmers were grazing their cattle this time? On 12th June farmers were farming in the field. The APF again suddenly got crazy and started firing at those farmers. OMG. 4. COVID-19 is not a usual case and Indian media defining the scenario as a usual happening is not rational. 5. When the APF respectfully tells the Indian group trying to enter Nepal, even if by mistake, to go back as we are under full lockdown, why don't they respect the APF, say, rather attack to the APF? 6. Nepal-India border issues and border management has to be given focus promptly. 7. Propaganda, fake and provoking news has to be stopped from the Indian media, run in both Hindi and English language. #Godai Media and #Godai Media 2, or simply boycott Indian media internationally. 8. Discipline is a must in the citizens of both sides. 9. Stop making hate comments and speech in social media. Rather, focus on factual, rational, and reasonable talk. Avoid the prejudice tact. 10. Friendship has to be re-established between Nepal and India.
देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अगली खबर का रुख कर लेते हैं नेपाल की बात, जहां पर पीएम ओली की बोली क्या बदली। नेपाली एपीएफ यानी कि नेपाल आर्म पुलिस फोर्स के जवान गोली चलाने लगे हैं। 100 सेकंड में आपको दिखाते हैं कि सीमा पर भारतीयों पर क्यों गोली चलने लगी है। भारत नेपाल सीमा पर खरसलवा गांव के पास शुक्रवार की शाम करीब 5 बजे नेपाली एपीएफ और भारतीय ग्रामीणों के बीच हुई झड़प के दौरान एपीएफ जवान द्वारा हवाई फायरिंग की गई। इसके बाद कुछ घंटों के लिए सीमा पर तनाव हो गया। खबर है कि हालात को संभालने बैद्यनाथपुर भंगा कैंप, खरसलवा कैंप और जमुनिया कैंप के एसएसबी जवान और झरोखर थाना पुलिस के जवान पहुंचे। ग्रामीणों ने नेपाल के जवानों से बातचीत के बाद मामले को शांत कराया। बैद्यनाथपुर भंगा कैंप के इंस्पेक्टर मिलिंद बहुगुणा के मुताबिक खरसलवा के रविंद्र प्रसाद कुशवाहा की 50 वर्षीय पत्नी सीमा देवी घास काटने नेपाल सीमा के पार चली गई, जिसे देख नेपाली एपीएफ के जवानों ने मना कर वापस जाने को कहा। नहीं मानने पर महिला के साथ बल प्रयोग किया गया, जिसके बाद गांव के लोग जुटे और तनाव बढ़ गया। कहा सुनी के बाद नेपाली जवानों से झड़प हो गई। बताया जाता है कि महिला ने अपने बचाव में घास काटने वाले हंसुआ से नेपाली जवान के हाथ पर वार कर दिया, जिससे तिलमिलाकर जवान ने फायरिंग कर दी। उसके बाद सीमा पर अफरा तफरी मच गई। घायल महिला का इलाज घोड़ासहन अस्पताल में चल रहा है। इधर एसएसपी समेत कई वरीय अधिकारी इस गंभीर मामले पर नजर बनाए हुए हैं। बिहार और नेपाल की खुली सीमा के बीच अब तक टोका टोकी की कोई बात सामने नहीं आई थी, लेकिन नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की भारत के खिलाफ लगातार बयानबाजी के बाद मामले बिगड़ रहे हैं। भारत और नेपाल के बेटी रोटी के संबंध के साथ इतिहास को भी तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई। हालात ये है कि सीमा पर लगातार तनाव बढ़ रहा है। बताया जाता है कि ओली लगातार चीन के उकसावे पर भारत के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी और हरकतें कर रहे हैं, जिसका असर जमीन स्तर पर भी अब देखने को मिल रहा है। दोस्तों फिर से एक बार वो हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था, यानी भारत और नेपाल के बॉर्डर पर फिर से एक बार झड़प हुआ है और उस झड़प में नेपाल के 3 एपीएफ घायल भी हो चुके हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि वो झड़प क्यों हुआ और गलती किसकी है, वो आप खुद डिसाइड कर लेना। तो दोस्तों नेपाल और भारत के बॉर्डर, जैसे कि हम लोग जानते हैं, जब से कोविड-19 स्टार्ट हुआ है तब से नेपाल और भारत का बॉर्डर को सील कर दिया गया है, यानी अभी आवागमन पूरी तरह से रोक दिया गया है। ना तो भारत के आदमी नेपाल में जा सकता है, ना तो नेपाल के आदमी भारत में जा सकता है। दोस्तों झड़प होने का मुख्य कारण यह है कि एक भारतीय महिला नेपाल में आई थी और वो घास काट रही थी अपने कुछ पालतू जानवरों के खिलाने के लिए। तो नेपाल के एपीएफ के जवान गया वहां पर और उस औरत को बोला कि आंटी आप यहाँ पर मत रहिए, आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि अभी तक वो जो भारत और नेपाल के सीमा है वो पूरी तरह से खुला नहीं है। आप भारतीय यहाँ नहीं आ सकता है, ना तो नेपाली भारत में जा सकता है अभी के पीरियड के हिसाब से। तो दोस्तों उस महिला ने पलट में जवाब दिया कि हमारा हर चीज़ नेपाल में है, हमारा खेती बाड़ी हर चीज़ नेपाल में, तो हम नहीं आएंगे तो कैसे चलेगा। मतलब कि वो कुछ अलग टोन में एपीएफ के जवान से बात किया और वो बोला कि तुम सिपाही हो तो हमारे पास सिपाही नहीं है, तुमसे भी बहादुर सिपाही हमारे पास है। कुछ ऐसा, मतलब कि ऐसा बात बोला कि उस जवान का खून खौला देने वाला बात था। तो दोस्तों उस औरत ने ऐसा बात बोला और उसके बहुत गंदी गंदी गाली दिया उस एपीएफ के जवान को। दोस्तों जब उस एपीएफ के जवान को वो गाली बर्दाश्त नहीं हुआ तो उस औरत को वो धक्का दे दिया। ऐसे में जब वो औरत को धक्का दिया और वो औरत गिर गई और उस औरत को गिरते हुए देखकर बॉर्डर उस पार यानी भारत में जो लोग थे वो देखे और दौड़ के चले गए कि वो औरत के साथ दुर्व्यवहार किया है एपीएफ के जवान ने, ये सोचकर, और गए और बिना कुछ जाने सुने मतलब कि दोनों तरफ से झड़प होने लगा। और उस झड़प के दौरान में जिस औरत को धक्का दिया था उस औरत ने जो घास काटने वाली औजार होता है जिसे हंसुआ कहा जाता है, उस हंसुआ को चलाने लगी और उस हंसुआ को चलाते वक्त एपीएफ के एक जवान को
कट लग गया वहीं पे। तो दोस्तों जब झड़प हो रहा था तो एक एपीएफ का जवान को पीठ पे बहुत जोर से चोट लगी है और उसे बहुत बड़ा सा निशान लग चुका है, जो कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हो। हंसुआ से जो कट का निशान आया है वो भी आप लोग देख सकते हो कि किस तरह हंसुआ का जो कट वो उस औरत ने एपीएफ के जवान के बाजुओं पर लगाई है, वो आप साफ तौर पे देख सकते हो। तो दोस्तों इस तरह झड़प आगे बढ़ने लगा और बहुत बृहत रूप से यह झड़प बढ़ गया था। नरकटिया गांव के पूरे लोग उलटकर चल गए थे भारतीय के लोगों का सामना करने के लिए, और वहां से भी भारतीय लोग बॉर्डर पर आ चुके थे सामना करने के लिए। बात यहां तक बढ़ चुकी थी कि दोनों गांव के लोग एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं, जो कि पहले एक दोस्त हुआ करते थे दोनों देश के लोग, दोनों गांव के लोग। तो ऐसे में दोस्तों इन दोनों मामलों को सल्टा दिया गया है। कोई बड़ी बात नहीं है, ना तो ये इंटरनेशनल लेवल का कोई झड़प था, यह सिर्फ वहाँ का लोकल लोगों के बीच के झड़प था, जिसमें 3 सशस्त्र प्रहरी बल के जवान को घायल हो गया था। तो दोस्तों ये आखिर कब तक चलता रहेगा? इसमें कहीं ना कहीं हमें जो लगता है, मुझे पर्सनली लगता है कि भारत सरकार के भी कुछ ना कुछ तो गलती इसमें है, क्योंकि अभी तक मोदी जी कोई भी नेपाल के लिए स्टेटमेंट नहीं अभी तक दिए हैं। नेपाल के बारे में कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है, चाहे वो काला पानी के लेकर हो, चाहे वो अयोध्या का लेकर हो, चाहे नागरिकता बिल के लेकर हो, चाहे ये बॉर्डर डिस्प्यूट जितने भी चल रहे हैं उसके लेकर हो। मोदी जी अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो भी ये झड़प हो रहे हैं, इन लोगों का भी कुछ न कुछ तो हाथ है। दोस्तों 2 मित्र राष्ट्र अब एक दूसरे का दुश्मन बनते जा रहे हैं, और ऐसे में दोस्ती का होप हम लोग खो रहे हैं। तो दोस्तों टाइम होते हुए दोनों पक्षों के लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि टेबल टॉक कीजिए और इस प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दीजिए, और फिर से नेपाल भारत का रिश्ता का अच्छा दिन लाइए, क्योंकि ये आप ही लोग कर सकते हो। ये पब्लिक टू पब्लिक रिलेशन है, जो कि बेटी रोटी का संबंध था, जिसे अब तार तार होते हुए हम लोग अपने आंखों से देख रहे हैं। कहीं ना कहीं भारतीय लोग, भारतीय मीडिया और भारतीय राजनेताओं के द्वारा नेपाल को प्रताड़ित किया जा रहा है, जो कि कई मायनों में बिल्कुल सराहनीय नहीं है। दोस्तों भारत और नेपाल के झड़प होने में दोनों का घाटा है, भारत को भी उससे घाटा है और नेपाल का भी घाटा है। तो दोस्तों प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, हम बार बार कहते हैं कि प्लीज भारत और नेपाल का रिश्ते को मजबूत हमें करना है, तोड़ने नहीं देना है, टूटने नहीं देना है। आज मैं बोल नहीं पा रहा हूं क्योंकि मैं अपने आंखों से वो एपीएफ के जवान का घाव देखा हूं, जो कि कई रूप से वो घाव बहुत ही गहरा था। एक एपीएफ के जवान का जो पीठ पे जो निशान आया है वो भी मैंने अपनी आंखों से देखा, जो कि देखकर मुझे ये न्यूज़ बनाने वक्त बहुत सोचना पड़ा कि मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। बहुत ही दुख होता है दोस्तों जब 2 मित्र राष्ट्र के बीच में ऐसे ऐसे घटनाएं घटे, तो कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप की जो होप है वो घटती जा रही है। तो मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ स्पेशली मोदी जी को कि आप आगे आइए और इस बिगड़ते हुए हालात को संभालिए, क्योंकि हम केपी शर्मा ओली जी को कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो कई बार बोल चुके हैं टेबल टॉक करने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ से ही कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं दुख लगने वाली बात है। Our conclusions. 24th of July 2020. 1. Nepal was under ongoing full lockdown from months. All international borders closed. All the bordering peoples were well aware of this. Nepal plus India. Still such an incident. Political agenda from the Indian side. 2. This time Pharma card and China card both are used by the Indian media. 3. Indian politics and Indian media are found to be expressing their extreme xenophobia, dragging all of its neighboring countries in the scene. This time Indian politics plus Indian media choose Nepal. 4. Indian politics plus Indian media are found to work together like bread and butter in directing and stating unilateral statements, fake, propaganda, baseless,
towards other countries, mostly neighboring countries. This time that luck was for Nepal. 5. When the APF respectfully tells the Indian people, trying to enter Nepal, even if by mistake, to go back as we are under full lockdown, why don't they respect the APF, say, rather attack to the APF? 6. Nepal-India border issues and border management has to be given focus promptly. 7. Propaganda, fake and provoking news has to be stopped from the Indian media, run in both Hindi and English language, #Godi Media and #Godi Media 2, or simply boycott Indian media internationally. 8. Discipline is a must in the citizens of both sides. 9. Stop making hate comments and speech in social media, rather, focus on factual, rational, and reasonable talk. Avoid the prejudice tact. 10. Friendship has to be re-established between Nepal and India.